हेलो, किसी ने एलेग्रा का नाम सुना है? सैनोफी का ड्रग है जो चिल्ड्रंस में है फीवर वगैरह के लिए यूज होता है या एलर्जी के लिए, Yes, sir. जी राइट? सर। It was recalled from the market. Certain batches of that product was recalled from market. किसी ने सुना है ये इंसिडेंस? अभी रिसेंटली हाल ही में हुआ है. Can anybody tell me why it was recalled? Hello? Because it was observed that there was possibility कि वो जो सर्टन बैचेस थे वहां पे माइक्रोबियल कंटेमिनेशन वो प्रोडक्ट में हुआ था या देयर वाज चांसेस और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन थे एंड कंपनी डोंट वांटेड टू टेक एनी रिस्क ओके with the patient, so they recalled it, right? So from where they got this information that these batches may be contaminated? Obviously, when patients or doctors, okay, whosoever was using that drug, if they have observed it, they might have reported it, and company has taken precautionary action for that, right? So that जो भी batches market में available थे which were not sold, they have recalled it for the safety of patient, right? Hello, hope Yes, sir. you are getting Yes what I am sir. trying to say, right? Yes sir. If you go almost 50 60 70 years back, okay, there was one drug named as thalidomide, right? Did you heard this name, thalidomide? Yes sir. Right? So see, जब वे 50s and 60s में ये ड्रग यूज करते थे on pregnant women, okay, it was used in pregnant women for morning sickness, which is very common in pregnant women, right? Yes. And it was observed that कि pregnant women लेती थी और उनका morning sickness ठीक होता था. But over the period of time ये ऑब्जर्व हुआ था कि जो जो वुमेन्स ने वो लिया है ड्रग, उनके जो आफ्टर डिलीवरी, Limbless babies. exactly, who was that one? Sir Shruti Sudha Pani. Yeah, hi, right, Shruti. So उनके जो limbs थे, either they were very small, okay, और किसी को limbs नहीं थे, and there were many kids or newborn babies which were died because of this. Now tell me, यहाँ पे risk कितना है and benefit कितना है? Sir, Do you risk think is we very should high. continue this drug in pregnant women because it No, was sir. benefiting them for morning sickness? No sir. No, sir. No sir. Right? We Benefit cannot कम है take और this risk much बहुत risk, ज़्यादा right? है. Yes. Right? So whenever we feel that risk is more than the benefits, okay, and it can be harmful, okay, at that time, that drug we will not continue in the market, right? Current it. But I have one question for you guys here. मार्केट में तो डायरेक्ट ड्रग नहीं किया होगा वो लॉन्च थैलिडोमाइड. Obviously there will be testings and all those things, right? Yes, sir. Drug have to go through the different clinical trials, correct? Pre-clinical trials and clinical trials. Exactly. Yes. Drug has preclinical trial, then clinical trials, right? And in the last phase it comes into market, right? So फिर was it not identified during clinical trial? ये तो आइडेंटिफाई होना चाहिए था, right? Yes, sir. Then why it was not identified? See, clinical trial has its own limitations, right? Because we have very limited number of patients, right? Till phase सर 3. Hello? Yes, who is there? सर मेन चीज ये है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ना, अलग अलग फेज में अलग अलग नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, पर Exactly. जो मार्केट वाला जो फेज आता है उसमें ऑलमोस्ट सभी पे वो ड्रग ट्राई होती है और सबका बॉडी टाइप अलग होता है. Perfect. Who is that one? Who is सर that? दीपांशु चौहान. Yeah, perfect, Dipanshu, right? So जब ड्रग मार्केट में आता है तो इट इज यूज्ड बाय वाइडर पॉपुलेशन, राइट? बहुत ज्यादा लोगों यूज करते हैं, राइट? एंड हियर कम्स एक्चुअल रोल ऑफ अस, राइट?
कि देयर कैन बी चांसेस कि जो साइड इफेक्ट्स क्लिनिकल ट्रायल्स में आइडेंटिफाई नहीं हुए, patients may start reporting it, okay, and we have to start monitoring because there are n number of drugs key which was launched in the market and after few days they were recalled from the market because of such harmful side effects were noticed among the patients who were using it, right? Correct. Yes or no? Yes, sir. So Yes, see, sir. nobody has given rights to us to play with patients life, right? Yes, आप sir. सपोज हेडेक के लिए ले रहे हो स्मॉल गोदे और उसको हार्ट अटैक आके वो मर रहा है, तो देयर इज नो यूज ऑफ दैट टैबलेट, राइट? करेक्ट. Exactly, sir. सो दिस इज व्हाट द रोल ऑफ फार्माकोविजिलेंस कम्स, राइट? बट मुझे Yes, अब एक चीज बताना, you all are pharmacists, you all have taken medicine at some point of time in your life, right? कोई sir. ऐसा है जिसने अभी तक एक भी मेडिसिन नहीं लिया है? sir. There is एवरीबॉडी हैज टेकन, राइट? probability. सभी ने ली होगी सर. राइट. तो मुझे बताना, अगर सभी ने मेडिसिन लिए, कभी तो आपको कुछ मेडिसिन लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट हुआ होगा. Yes, Has anyone sir, होते reported हैं. this side effect? Has anyone reported this side effect कि मैंने ये ड्रग लिया और मुझे ये साइड इफेक्ट हुआ? Has anyone reported? No, No, sir. right? No, sir. See, to start this from us only, right? Being pharmacist. अगर हम ही स्टार्ट नहीं करेंगे, हम ही लोगों में ये अवेयरनेस नहीं स्प्रेड करेंगे, तो we will not get the information. And the basic funda lies here, unless and until we don't have any information, we cannot do analysis, right? Data तो चाहिए आपको analysis करने के लिए. Recently, Correct. I faced skin rash after using plus 4G multivitamin capsules. Right. So there are multiple ways, okay? आपके आप फॉर्म है, ओके, आप कंपनी को रिपोर्ट कर सकते हैं. Different companies have their call centers dedicated for this, right? We have forms, okay, which is released by CDSCO and other government institutions. You can fill that adverse event forms, right? So yes, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन रिलीज होंगी, ओके, कंपनी के पास आएंगी, दे विल स्टार्ट एनालाइजिंग दिस, राइट? कि कुछ डिफरेंट साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं क्या, which were not there in observed during clinical trial, या even if they were observed during clinical trial, there can be chances कि तो वो लेस सीवियर होंगे और अभी ज्यादा सीवियरिटी इंक्रीज हो गई उनकी, राइट? एंड इट इज हार्मफुल, राइट? करेक्ट. So unless and until company gets this information, they will not be able to withdraw any conclusion about the drug. Correct. Getting Yes, my sir. point? Yes, sir. Yes, sir. Information is most important thing here, right? Yes, And sir. anybody can report it. ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रिपोर्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन. एनीवन हु इज टेकिंग मेडिसिन, पेशेंट, पेशेंट्स रिलेटिव, पेशेंट्स केयर टेकर, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, ओके, एनीबडी कैन रिपोर्ट दिस इंफॉर्मेशन. ऐसा नहीं बोलेंगे आप अगर रिपोर्ट कर रहे तो यू आर पेशेंट्स, यू डोंट नो दिस मेडिकल टर्मिनोलॉजीज एंड ऑल दैट, यू कैन नॉट रिपोर्ट. ऐसा नहीं होगा. इफ यू आर रिपोर्टिंग, कंपनी हैज टू टेक एक्शन ऑन दैट रिपोर्ट. गॉट इट? Yes, sir. And ये जब सब इंफॉर्मेशन, हेलो, am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Thank you. So ये इंफॉर्मेशन आने के बाद कंपनी विल ट्राई टू एनालाइज इट. इट हैज टू गो थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द फार्माकोविजिलेंस, ओके, एंड दे विल ट्राई टू एनालाइज कि सच में इससे हो रहा है क्या. एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि ऑलवेज रिकॉल इज द ऑप्शन, राइट? देयर कैन बी some different analysis, okay, which may come from that result. For example, what your reports are getting. Your voice is very low, Nina. Where is our Indian form? Give me a minute, Amit. Sure. Is it better now? Hello? Yes, sir. Yes. Okay, fine. So there can be chances na कि without recalling drug also we can
safely use that drug, right? For example, अगर ऐसा ऑब्जर्व हुआ जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं कंपनी के पास कि देयर इज सर्टेन साइड इफेक्ट विच पेशेंट्स आर एक्सपीरियंसिंग. फॉर एग्जांपल कोई एंटासिड है, एंटासिड लेने के बाद लोगों को माइग्रेन आ रहा है. ओके, देयर आर लॉट ऑफ कंप्लेंट्स रिगार्डिंग माइग्रेन. आई एम जस्ट गिविंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल. ओके, सी कि कंपनी ने ऑब्जर्व किया कि people are complaining that they are getting migraine after taking this antacid, and whatever reports their company is getting, they have observed that ये जो माइग्रेन हो रहा है, ये माइग्रेन वही लोग रिपोर्ट कर रहे हैं जिनको डायबिटीज है, राइट? ऐसा अगर एनालिसिस आता है बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिपोर्ट्स विच कंपनी हैज रिसीव्ड, राइट? तो rather than recall in market, can we just contraindicate this drug in the diabetic patient, right? Yes, sir. राइट? sir. तो यहाँ पे जो Yes, sir. साइड इफेक्ट आ रहा है डायबिटिक पेशेंट्स को आफ्टर टेकिंग दिस ड्रग विच इज सीवियर, राइट? सो वो भी सेफ रहेंगे बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग दिस ड्रग्स. वी आर contraindicating in the diabetic patient. At the same time, others who are not diabetic patients, they are getting benefited from this. Correct? Isn't it? Yes, sir. कर सकते हैं ऐसा, जी sir. right? There can be chances. Side effects are always not, हमारा एक परसेप्शन हो गया कि साइड इफेक्ट्स मींस ऑलवेज दे आर नेगेटिव, राइट? बट इज इट द थिंग? साइड इफेक्ट्स कैन बी पॉजिटिव आल्सो, राइट? Yes. मिनोक्सिडिल का नाम सुना है? मिनोक्सिडिल ड्रग, Yes, sir. all are pharma students, right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. And antihypertensive drug. Yes, it is antihypertensive, right? Yes. Apart Yes, from sir. that, is there any other use of this minoxidil? It's a vasodilator, sir. Okay, Sir, apart from it this, increases blood circulation and So it is used in increasing the blood circulation and preventing hair fall and help in regrowth of it hair. perfect. Okay, लेकिन if you go and search the history about minoxidil, it was not approved for hair growth initially, right? Hair fall Yes, के sir. लिए. Yes. It was just approved for hypertension, right? When it was launched in the market. But when people started using it, they have noticed that उनका हेयर ग्रोथ अच्छा हो रहा है, या कोई जो लोग बाल्स थे वो भी आके बोल रहे यार मैंने ये हाइपरटेंशन तो मेरा ठीक ही हो गया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे जो हेयर लॉस हो गया तो वो भी अच्छा हो गया है, राइट? तो देन अगेन it was investigated on that other line कि can we start using this drug for hair growth, right? And Yes, sir. it was noticed that yes, we can use that drug because this was evident from the whatever reports we were getting, okay, and the research which was done by the team. It was noticed that yes, this can be used for hair fall also, right? And then later it was also approved for hair fall. Got it? So every time miss, here the thing is that key we may get some additional information also which can be helpful for us, right? When people report, start reporting, अगर आपका हेयर ग्रोथ हो रहा है आप रिपोर्ट ही नहीं कर रहे तो कंपनी को थोड़ी सपना आने वाला है कि this can be used for hair growth also, right? And people are noticing this good benefit, right? Correct? Getting my point? Yes, sir. Yes. So this is all, okay, about this pharmacovigilance, right? It will revolve around these words only. Risk, benefit, okay, कहाँ पे पेशेंट को ज्यादा बेनिफिट्स आ सकता है, राइट? या अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ड्रग इंटरैक्शंस नाम सुना है, राइट? Yes, sir. फर्स्ट ईयर में Yes. ये वो रहता है, राइट? देन मुझे बताना कि कोई ड्रग का इंटरैक्शंस बताना विच इज वेरी कॉमन एंड इट इज अवॉइडेड कि ये ड्रग के साथ लेना नहीं चाहिए. Can anybody tell me any such example? Aspirin and warfarin.
Warfarin with NSAIDs? Aspirin. Aspirin. Right. Aspirin is non-steroidal anti-inflammatory drug, right? Sir. Correct. So why क्या होता है, क्यों नहीं लेना चाहिए वारफरिन के साथ एस्पिरिन या दूसरे NSAIDs? Can anybody tell me what is risk here? Due to most of the blood loss. Right. Warfarin is itself blood thinner, right? And अगर NSAIDs के साथ लिया तो it exacerbate it, right? Correct. Yes, sir. Who is that one? तो अगर ये इंफॉर्मेशन हमें आई है, अगर ये हमें ऑब्जर्व हो गया है, राइट, कि whenever patient takes aspirin and warfarin together, okay, इसका पेशेंट का ये ब्लड थिनिंग ज्यादा होता है एंड देयर कैन बी चांसेस ऑफ मोर ब्लड लॉस, राइट? तो वी कैन इजीली अवॉइड दैट, राइट? वी कैन जस्ट ऐड इन द लीफलेट, ड्रग के साथ तो लीफलेट आता है कभी कभी एक छोटा, राइट? किसके साथ लेना चाहिए, किसके साथ नहीं लेना चाहिए, राइट? वो एक छोटी चिट्ठी आती है, Yes, sir. राइट? हाउ मेनी ऑफ यू रीड दैट वन? नोबडी, राइट? रीड करते हो? मुझे अगर ये इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व हुआ कि सर्टेन ड्रग इज इंटरैक्टिंग विद सर्टेन ड्रग्स एंड इट इज कॉजिंग साइड इफेक्ट, राइट? So simply I can add it in my that leaflet or contraindications after research in by the PV team, right? अगर उसका confirmation मिलता है after all these signal detections, PEBRAS and all those studies, right? Studies, okay? Yes, this is happening. ये दो drugs interact हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, right? So we can prevent that also, right? Just by adding that as a contraindication that these two drugs cannot be used together. Simple Yes, sir. solution. Correct? तो हाँ ना कुछ तो बोलो। मुझे वन वे Yes, sir. वेबिनार एक्चुअली Sir. अच्छा नहीं लगता, ओके? आई एम जस्ट हियर टू इंटरैक्ट यू गाइस, ओके? गॉट इट? फाइन। तो there are n number of things like that, right, which can be studied in this pharmacovigilance. ये सब इंफॉर्मेशन हमें तभी आएगा जब लोग हमें रिपोर्टिंग करना चालू कर देंगे, राइट? जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर, हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड इट? Almost everyone has used. In our generation everybody has used it, right? Yes, sir. अभी यूज करते हैं, दिखता है कभी मेडिकल में? दिखता है अभी? No, No, sir. sir. Why? वो तो They have पूरा a ये time. ऐड आता था उसका, हर रोज ऐड आता था टीवी पे, राइट? It is produced a cancer. राइट, ओके। तो राइट, और ये इतना फेमस ड्रग था कि हर एक जब बेबी होती थी तो पहला किट ये जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का जाता था उसके घर पे, राइट? एंड इट वाज वाइडली यूज्ड, राइट? बट ये कंप्लेंट्स आने लगे कि there was some, it was observed that there was some traces of asbestos in that Johnson and Johnson baby powder, which was leading to the cancer. Okay, so that's the reason it was recalled from the market. Getting? So ये चीजें तभी most of the time observe होने लगती है जब drug is started using by the wider population, right? And not only used by the wider population, they start reporting that information. अभी इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग दिस, बट इफ यू गो इन द फॉरेन कंट्रीज, ओके, दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट यूज ऑफ सच ड्रग्स, ओके? एंड कुछ नोटिस होता है तो दे स्टार्ट रिपोर्टिंग इट. सो it helps entire community, right? So when you come into pharmacovigilance, you have to do all these things, right? And ultimately it is like, क्या बोलते हैं उसे, social service, right? You are saving lives of patients, right? And you are giving them more safety by use of or by providing such information which is analyzed by you guys, right, in pharmacovigilance department, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So am I audible?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sorry, I'm facing some network issue. Okay, so please bear with me that about that one. Yes, sir. Apart from that, कुछ आपको ड्रग्स में ऐसे भी कुछ ड्रग्स होते हैं कि दे जस्ट एक्ट इन सर्टन पॉपुलेशन एज सर्टन इथनिसिटी, राइट? कुछ ड्रग्स है जो अफ्रीकन में वर्क करेंगे, कुछ ड्रग्स है जो एशियंस में वर्क करेंगे, ऐसे कुछ ड्रग्स है. कैन एनीबॉडी टेल मी एनी नेम ऑफ सच ड्रग? है क्या सभी ड्रग्स सभी पॉपुलेशन में एग्जैक्ट सेम इसमें वर्क करते हैं, इथनिसिटी में, आई मीन टू से? No, sir. No, sir. It may vary due to environmental factors. Environmental factors, that genetic makeup of that particular race, right? Yes, sir. Exactly. Their That different was habits of that people during that region and all that, right? Isn't it? yes, जैसे कि sir. isoniazid का example, isoniazid used in tuberculosis, right? Yes, sir. Yes, sir. Is there any difference कि Asians में वो different work करता है and Africans में different work करता है? Have you read somewhere in your pharmacology? Or not? कुछ सुना है क्या? Isoniazid works different in Asian race and in other race it works differently because of that one particular enzyme is lacking metabolism की वजह से. Am I audible, Amit? Can you confirm? Yes, yes, audible. Yeah. Fine. So this information also can be analyzed with the help of this pharmacovigilance department. अगर complaints आ रहे and complaints are from the certain race only, right? कि भाई this is not working in us, okay, we have not noticed any effect of these drugs and all that. If such kinds of complaints are coming, right, so we can further analyze this, okay, such may is there any difference, genetic difference due to which this drug is not acting in certain population. There can be chances कि जापानीज लोगों को कम डोज लगता होगा कोई ड्रग का, हमारे लोगों को ज्यादा लगता होगा, राइट, बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिफरेंस, राइट? so this Yes, can be adjusted accordingly, right? because different races different genetic makeup. ऐसा नहीं कि certain drugs, for example aspirin का suppose 10 mg drugs, let's take a hypothetical example कि 10 mg drugs work कर रहा है headache में in this Asian population, right? it cannot be the same कि 10 mg work करे Japanese में, right? there can be variation because of genetic makeup, right? so accordingly dose also can be adjusted, okay, and that information can be provided to the healthcare professionals. You adjust the dose accordingly as per these races, right? so this all information can be gathered, okay, only when we get the information via different sources, okay, after their analysis, after their monitoring, we can come to certain conclusion, and then we can take certain preventive measure actions कि ड्रग विड्रॉल करना है या कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आ रहे हैं तो वो इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, या डोज एडजस्ट करना है, या कोई बैच रिकॉल करना है मार्केट से, राइट? Isn't it getting? Are Yes, you sir. able to correlate now the definition Yes, of sir. pharmacovigilance? Yes, sir. Yes, sir. Okay, see, I want to keep it simple here because here the students are from the different areas. Some students are from the rural areas, some students are from the urban areas, and they are coming from the different backgrounds, right? so that is my motto, I want to keep it as simple as possible, right, so that it can reach to you. Got it? Fine. So after listening this information, okay, how many of you feel that yes, I want to do career in pharmacovigilance? Hello? Yes, sir. Sir. Everybody is here because they are interested to know about what is pharmacovigilance, and they are also interested
to know more about this domain, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So अगर देखो फार्माकोविजिलेंस में आपको जॉब करना है तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, and if you are these 3 things, there is no company which exists in India or outside India which will not hire you if you have these 3 things. First thing is that you should have solid knowledge about your pharma, right, which already you are learning right now, especially pharmacology, pharmaceutics and all that, right? Okay. Yes. If you have this knowledge, okay. Yes, sir. Second thing, you should be confident during interview. You should have good confidence level, okay. If you are confident, if you have knowledge, and if you are good communicator, there are high chances that you are going to crack the pharmacovigilance interview. And all these things, 3 things are interlinked. How? I will tell you. If you have good knowledge about pharma, okay, whatever you have learned in your academics, obviously you will be confident during interview because questions will be asked from that background only, right? And आपको जो पता है वो अगर कोई पूछ रहा है आपको तो ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाओगे, करेक्ट? एंड आप जब कॉन्फिडेंट होते हो कोई चीज के बारे में तब आपका कम्युनिकेशन एक अलग लेवल पे होता है, राइट? आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो, राइट? सो बट देयर आर अगेन chances, okay, how you start preparing for the interview, right? कभी कभी ऐसा होता है आपके पास नॉलेज होता है बट आप डर जाते हो ड्यूरिंग इंटरव्यू, राइट? सो अगर थोड़ा हम प्रॉपरली प्लानिंग करें इंटरव्यू के बारे में, राइट, यू नो देयर इज वन सेइंग कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, राइट? अगर Yes, आपकी sir. प्लानिंग प्रॉपर होंगी तो आप इट्स जस्ट फॉर्मेलिटी कि आपको इंटरव्यू को जाना है, यू आर गोइंग टू क्रैक इट, राइट? अभी आपको पता है कि इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू में क्या पूछने वाले हैं वो भी मैं बताता हूँ. मोस्ट ऑफ दीज आर कॉमन क्वेश्चंस, ओके, which will be asked during interviews, okay? So you have to just prepare those. And how you have to prepare those? You just make list of those questions and write down the answers, okay? And ensure that how your answer can be different from others, okay, right? And how it can be impressive. अगर आप वही घिसा पिटा आंसर देने वाले हो जो सब दे रहा है, okay, it will not separate you from the crowd, right? Isn't it? आप कंसिडर करो कि आपकी कोई कंपनी है, ओके, एंड आपको 5 लोग लेने हो कंपनी के लिए एंड आपके पास 100 लोग आए हैं, राइट? लेकिन आप सिर्फ 5 लोगों को जॉब दे सकते हो, तो आप कौन से 5 लोगों को जॉब देंगे? लेट्स टेक एग्जांपल कि आपकी कंपनी है फार्माकोविजिलेंस और आपको 5 लोग लेने हैं, ओके, फ्रॉम द फार्मा बैकग्राउंड. ऑब्वियसली जो भी आएंगे सभी फार्मा बैकग्राउंड से आएंगे बिकॉज दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट यू हैव पोस्टेड, right? So out of 100 people, which 5 you will choose? Hello. Those who are having accurate knowledge. Okay, Those who have accurate good knowledge introduction skill. or Those who have right. आप वही लोगों को चूज करेंगे जो कॉन्फिडेंट है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास स्किल सेट्स है apart from this, right, which can be helpful for the pharmacovigilance, right? Yes, राइट. sir. तो आप इंटरव्यू में वही जज करोगे कि बंदे के पास ये स्किल्स है क्या, तो कौन से स्किल्स है अपार्ट फ्रॉम दिस विच कैन बी हेल्पफुल, राइट? सबके पास फार्मा नॉलेज है, राइट? बट इफ यू डोंट नो, सिंपल चीज है, आपको क्लासिफिकेशन पूछा हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, राइट? आपको बताने नहीं आया इंटरव्यू में, राइट? सो व्हाट इट शोज, ये बंदे का फार्मा ये एकेडमिक्स अच्छा नहीं है, स्किल सेट्स, राइट? इजंट इट?
आपको पता है कि क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, जनरल ड्रग्स के डिसीजेस के पास बारे में पूछा जाता है, जैसे व्हाट इज सीओपीडी, व्हाट इज अस्थमा, राइट, या डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पूछा जाएगा आपको कि व्हाट इज रोल ऑफ किडनी, व्हाट इज रोल ऑफ लिवर, व्हाट इज रोल ऑफ heart, right? So you should be able to tell that, right? Different systems in the body, right? These are basic questions which I am telling here, right? Isn't it? Which you might have studied during your pharma, right? Academics. Am I asking anything new, different here? No, right? Getting? Hello? आपको ये Yes, sir. पूछा जाएगा कि what is mean by off-label use, right? What is what do you mean by medical history of patients? What is mean by suspect drugs, right? Isn't it? Basic questions. Even if you search on the internet for frequently asked the questions in pharmacovigilance, right? Basic. You will get the list of those questions, okay, along with answers as well, right? You have to just prepare those questions, right? And your most of the work done here only, right? Apart from, but ऐसा ही नहीं कि सिर्फ यही questions पूछे जाएंगे. There are certain other questions also which will they will try to judge the personality of you, right? Simple, most of the questions, your interview will start with the question like, tell me about yourself, right? That, right? Why you want to join pharmacovigilance, right? आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि आपको फार्माकोविजिलेंस क्यों ज्वाइन करना है, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर इट, राइट, obviously you are losing the battle there, right? Isn't it? आप अगर see there are different domains after B Pharma, right? You can go into manufacturing, you can go into QA, you can go into medical writing, medical scribe, regulatory, right? Isn't it? Out of which, why you are choosing pharmacovigilance? So you should be able to justify this question, right? Correct? Yeah. They ask you, why you want to join our company only? There are many companies which are working in pharmacovigilance, right? Why you want our company only? तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं आप मुझे आपकी यहाँ पे जॉब ओपनिंग दिखी इसलिए मैं आया इंटरव्यू को, राइट? ऐसा कुछ नहीं, मेरे को आपकी ही कंपनी ज्वाइन करना है, राइट? योर आंसर शुड बी समथिंग अपीलिंग कि why you are interested in this company, right? You should be having some knowledge about that company, right? So from where you will get that knowledge? Audible, guys? Yes, sir. तो मुझे बताओ ना कि अगर लेट्स टेक एग्जांपल, अगर इफ यू वांट टू गो टू टीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हो और आपके वहां के इंटरव्यूअर ने पूछा आपको कि व्हाई यू वांट टू जॉइन टीसीएस, you should be prepared with your answer, right? Isn't it? And तो आपको कहां से मिलेंगे इंफॉर्मेशन? वो कंपनी को जाके सर्च करो, व्हाट इज डिफरेंट इन दैट कंपनी, राइट? क्या करती है कंपनी, आपको पता होना चाहिए, एंड व्हाई यू आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी, यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट, राइट? इजंट इट? अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको पूछ रहे हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, राइट? और आप बता रहे हो मेरे घर में 4 मेंबर है, मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मदर ये करती है, मेरे ब्रदर ये करता है, एंड ऑल दैट. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, राइट? ट्राई टू सेल व्हाट दे वांट टू बाय, राइट? यहाँ पे वो क्या बाय करना चाह रहे? टेल मी. दे वांट अ Our कैंडिडेट, knowledge. right, who have good pharmacovigilance knowledge, right, who are Yes. good in academics, right, and who is interested in working pharmacovigilance for certain reason. He is interested in this domain only, right? So you try to incorporate these things into your tell me about yourself. तो सामने वाले को लगेगा यस यही बंदा है जिसे मैं देख रहा था ये जॉब रोल के लिए, right? Isn't it? If you have done any additional course of pharmacovigilance, you can add that on. Okay, you can tell that why you are interested, because you are well versed with different terminologies in pharmacovigilance, right? You are good in computer skills, because ये सब जो होता है ये कंप्यूटर पे जॉब होता है आपका, राइट? किसी ने कोई आपके सीनियर से सुना जो पीवी में वर्क कर रहा है कि उसको जाके मैन्युफैक्चरिंग जैसा मशीन चलाना पड़ता है वहां पे? सुना है किसी ने? नो, राइट?
All sir. works is on computers only, right? Isn't it? So you can add what are your additional computer skills. आपने कोई कोर्स किया है MS Office या कोई, right, which has increased your computer efficiency skills, right? So you can add that one, right? So you can tell that I am already interested in such kind of IT job career. Okay, I am well versed with this all computer skills. In addition to that, I also want to serve society, because ultimately this job serves society by analyzing the safety benefit ratio, right? Risk benefit ratio about the drug, right? तो अगर ये सब आप चीज बोलोगे in your tell me about yourself or why you want to join pharmacovigilance, right? It will increase your probability and it will separate you from the other crowd, right? Correct? Hello. Yes. Hope you Yes. are trying to correlate what I am trying to say. Yes, sir. Right? Yes, So sir. prepare this. Basic thing is that take list of these all questions. Okay. Every day give 1 hour, okay, for the practicing these questions. तो जब आप रियल इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको लगेंगे यार कुछ अलग पूछा ही नहीं, राइट? एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ. 99.99 इंटरव्यू में आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेंगे एंड रिमेंबर मी एट दैट टाइम, ओके, कि सर ने बोला था कि दिस विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? अगर ये क्वेश्चन का में आप इम्प्रेस कर पा रहे हो इंटरव्यूअर को तो यू हैव वॉन द हाफ रेस देयर इटसेल्फ. मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में यही क्वेश्चन पे डिसाइड होता है कि आगे इंटरव्यू कितना जाएगा. एंड you take the remote control of the interview, you can take that also. You try to give any such information in your answer कि next question interviewer उसी चीज पे पूछेगा, right? Okay, try to add something different in that answer. So obviously वो उसके बारे में पूछा जाएगा. Okay, आपको पूछा जाएगा आपने अगर लिखा है कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है मेरे बी फार्म में, राइट? तो you should be able to tell about that project. पूछेगा कि oh, tell me about the project which you have mentioned in your resume, right? So you should be able to tell that. अगर आपने प्रोजेक्ट किया है नहीं, आपने किसी का कॉपी पेस्ट मारा है तो you will not be able to tell that, right? Correct. बट आपने सच में किया है तो you will be able to tell that, right? तो वो भी इंफॉर्मेशन आपके whatever you are writing in resume, question can be on each and every word, okay, can be asked. अगर आपने आपके हॉबीज लिखे रिज्यूमे में, for example, if you are written your hobby as reading in your resume, right? और आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि विच बुक यू हैव रिसेंटली रेड, और आपको कोई बुक का नाम ही आप बता नहीं पा रहे हो, राइट? तो इट शोज कि आपने कुछ तो फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है, राइट? एंड कंपनी विल नॉट प्रेफर सच काइंड ऑफ कैंडिडेट्स, राइट, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? आपको अगर आप बोलते हो कि आई हैव रेड अल्केमिस्ट बुक, राइट, रिसेंटली, तो if interview asks me what is that book, who is author, yeah, क्या what is message, what message author wants to give through that book, right? You should be able to tell that. Correct? आप बोलते हो कि मेरी listening music is hobby, right? तो अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि which kind of music you prefer to listen, आपको पता होना चाहिए different types of music, right? Correct? Hello, hope. Yes, sir. Okay. Apart from that, मेन चीज आती है आपका रिज्यूमे. ओके, आपका रिज्यूमे एंश्योर दैट प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो. यहाँ पे आप 10-12 कलर यूज कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट, इट डू नॉट गिव गुड इंप्रेशन. इट शुड बी प्रोफेशनल. आप किसी आपके सीनियर का रिज्यूमे ले लो या कोई अच्छा से रिज्यूमे भी आप अगर सर्च करोगे इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएंगे. ओके, तो टेक दैट रिज्यूमे, गिव your ample amount of time for the preparation of resume, okay, so that because at the end of day resume speaks on the behalf of you. जब आप ईमेल भेजते हो तो आप वहां पे सामने नहीं रहते हो एचआर के सामने, राइट? एचआर आपके रिज्यूमे के बेसिस पे आपको चूज करता है शॉर्ट लिस्ट, राइट? अगर उसके रिज्यूमे में आपके 10-12 स्पेलिंग मिस्टेक्स है, किधर भी फॉर्मेटिंग है, किधर भी बीच में टेबल है, किधर भी 10-15 कलर यूज किए डिफरेंट डिफरेंट, राइट? तो इट शोज कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस जॉब, राइट?
अगर आप कोई जॉब के लिए कर रहे, जस्ट करना है इसलिए अप्लाई कर रहे, वो एचआर विद इन 10 सेकंड आपका रिज्यूमे वही पे रिजेक्ट करेंगे एंड आपको कॉल नहीं आएंगे, और फिर आप आके कंप्लेंट करने लगोगे कि मैंने तो इतने कंपनीज को भेजा, किधर से कॉल ही नहीं आ रहा है, राइट? करेक्ट। आप अगर भेज रहे हो तो आपका प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, आप प्रॉपर जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके प्रॉपर आपका इंफॉर्मेशन होना चाहिए ईमेल बॉडी में। ऐसा नहीं कि सिर्फ अटैच कर दिया, प्लीज फाइंड अटैच द रिज्यूमे, या सिर्फ रिज्यूमे अटैच किया और जो ईमेल आईडी पे बोला गया है आपको सेंड करने के लिए वही पे आप सेंड करके दे रहे हो, राइट? इट विल नॉट वर्क, राइट? गेटिंग? Yes, sir. आप आपका एक प्रॉपर Yes, sir. फॉर्मेट बनाओ, व्हाट शुड बी सब्जेक्ट लाइन which will attract, you can correlate this with you guys also, right? आपके ईमेल में ढेर सारे ईमेल आके पड़े होते, राइट? डू यू चेक each and every email? No, sir. You No. will try to open those email which is having catchy subject line, right? या आपको लगता है कि ये पर्सन का ईमेल इंपॉर्टेंट हो सकता है, करेक्ट? Sir. Then only you open it, right? Same applies here also. आपके सब्जेक्ट लाइन में आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि सीवी ऑफ दिस, CV अंडरस्कोर आपका नेम अंडरस्कोर एक्सपीरियंस टू फार्माकोविजिलेंस प्रोफेशनल या सर्टिफाइड पीवी कैंडिडेट लाइक दैट, राइट? या कुछ ऐसा वर्ड, ओके, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, राइट, फॉर विच द HR इज लुकिंग, राइट? सो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज चांसेस कि आप वो आपका मेल ओपन करेंगे। मेल ओपन करने के बाद में भी आपने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज योर बैकग्राउंड, व्हाट यू हैव एडिशनली डन, ओके, रिगार्डिंग फार्माकोविजिलेंस, आपने कोई कोर्स किया है या आपने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गेन की है पीवी के बारे में। इफ यू आर राइटिंग दैट इन द बॉडी ऑफ योर ईमेल, ओके, ऑब्वियसली दिस creates your impression in front of HR or the person who is reading that email, right? एंड इट इंक्रीजेस चांसेस कि आपका वीडियो कॉल सेटल हो या आपको टेलीफोनिक कॉल आ जाए, राइट? एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपको कभी भी कॉल आ सकता है, राइट? एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड सो मच कि आपका पहला कॉल आ जाए इंटरव्यू का और आप यू आर गोइंग टू क्रैक इट, राइट? जस्ट, एंड ये प्रोबेबिलिटी कब बढ़ेंगी? जब यू आर प्रिपेयर्ड फॉर विथ ऑल दिस क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ओके? आप क्वेश्चंस ले लो इंटरनेट से, everything is available openly on the internet, questions ले लो, आंसर ले लो, every day give 1 hour for the preparation of this resume, आपका प्रॉपर करो, आपके सीनियर्स को दिखाओ, आपके टीचर्स को दिखाओ, get it corrected, okay, and then send it for which your company you are applying. Got it? Hello? Sir. Yes, sir. Yes, sir. अपार्ट फ्रॉम दैट आप बोलेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी में वैकेंसी है, राइट? या कंपनी वालों को कैसे पता चलेगा कि देयर इज वन कैंडिडेट हुजका बी फॉर्म हो गया अभी एंड ही इज लुकिंग फॉर पीवी जॉब, ओके, एंड वो कैंडिडेट में कैलिबर से, राइट? रिक्वायरमेंट तो दोनों की है, कंपनी को भी बंदा चाहिए और बंदे को भी कंपनी चाहिए, राइट? करेक्ट? Yes, sir. Now only problem is of the bridging gap here, right? How to bridge this gap, right? आपको मीडियम पता होने चाहिए कहाँ से आप ये कंपनीज तक पहुंच सकते हो जिनको रिक्वायरमेंट है, राइट? मेक लिस्ट of all companies which are working in pharmacovigilance. It is also available readily on the internet. Then target the companies, okay? आपको जहाँ पे काम करना है, okay? आपको ये सब इंफॉर्मेशन लिंक्डइन या अदर प्लेटफॉर्म्स पे आराम से मिल जाएंगी, ओके? वंस यू गेट द इंफॉर्मेशन, वो कंपनी आपने सपोज टारगेट करना है एसेंचर, राइट? आपको वो लोकेशन भी आप यू आर कंफर्टेबल विद दैट लोकेशन, राइट? So try to add the people, okay, from the HR department or the talent acquisition department. आप एक कीवर्ड से भी सर्च करोगे ना इंटरनेट पे विद कंपनी नेम, टैलेंट एक्विजिशन, रिक्रूटर वगैरह, आपको वो HR मिल जाएंगे, ओके? कनेक्ट विद देम, ओके? यू कैन मैसेज देम ऑन द लिंक्डइन, बट मैसेज भी प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप पहले मैसेज में उसको डाल रहे, प्लीज गिव मी जॉब, ओके, आई वांट जॉब, can you help me, right? It will not work in that way, right?
आपको पहले वो रिलेशंस बिल्ड करना आना चाहिए. ओके, ट्राई टू फॉलो दैट पर्सन. ओके, start posting different information about your pharmacovigilance department or whatever. Okay, you are doing right. तो आपका भी प्रोफाइल जब अगर कोई आके देखता है एचआर रिक्रूटर, राइट, तो उसको भी लगना चाहिए कि दिस बंदा इज एक्टिव एंड दैट पर्सन इज हैविंग डिफरेंट or sufficient knowledge about pharmacovigilance, and he's always try to explore new areas and opportunities about this pharmacovigilance, right? आपका प्रोफाइल भी वैसा रहना चाहिए. Then try to connect with the people from that company who are working in pharmacovigilance domain. Try to take guidance from them. I ask them how should I prepare for the interview, what can be done. Okay, I have done this, what more is needed so that I can get job in your company and all that. Try to build relations by using such methods. Got it? And then you can ask, okay, can you refer me? Okay, can you help me out? Okay, right. So those people will always, definitely there are people who are ready to help out you because they have also gone through the same phase during their initial phase of career, right? But for this we have to be very active, isn't it? We may get the contact numbers of those persons, okay, on LinkedIn, right? You can ask them, but there should be proper script when you are correcting with them, right? Directly आप कॉल कर रहे हो और बोल रहे हो मुझे जॉब चाहिए and all that, it will not work, right? You have to create some background for that, right? And HR लोग तो इतने माहिर रहते हैं, within their 10 to 15 सेकंड they will judge कि ये बंदे के साथ मुझे कन्वर्सेशन आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. Got it? So you should be ready with your scripts. क्या बोलना है, कैसे बोलना चाहिए, आपका टोन प्रॉपर होना चाहिए. Got it? अगर आप एरोगेंट टोन में बात कर रहे हो या हाई पिच में बात कर रहे हो, it will not give proper impression, right? Isn't it? Correct? आप इंटरव्यू में जा रहे हो, सपोज फेस टू फेस इंटरव्यू, आप कुछ भी कैजुअल्स पहन के जा रहे हो, जीन्स पैंट टी शर्ट, राइट, इट डू नॉट लुक्स गुड, राइट? अगर आप जा रहे हो तो प्रॉपर आप अटायर में जा रहे हो. ओके, इंश्योर दैट आप रिज्यूमे है, आपके कोई सर्टिफिकेट्स है तो उसकी प्रॉपर फाइल होनी चाहिए, राइट? और कैसे भी आप बाल कैसे भी करके जा रहे हो, राइट, इट इज नॉट वेल कोम्ड एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? आप जाके इंटरव्यूअर के सामने उसके मोबाइल रख रहे हो, आपके वो बज रहा है कंटिन्यूअसली, राइट? बीच में आपको इंटरव्यू में कॉल उठा रहे हो, राइट? इट डू नॉट गिव गुड इंप्रेशन, राइट? इट शोज दैट यू आर अनप्रोफेशनल. Correct? Hope I am trying to convey. Okay, you are getting what I am trying to convey you, right? Yes, sir. Yes. Okay. So ये सब छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे ना, it has a very big impact. Okay, and every small चीज पे आप जितना वर्क करेंगे ना, वो उतना आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ाएगा that you are going to crack the interview, right? अभी अलग अलग कंपनीज के अलग अलग मेथड्स होते हैं, कभी कभी कैंपस होता है, right? Then they will keep aptitude test first, right? तो आपका थोड़ा एप्टीट्यूड के ऊपर भी ध्यान दे दो. कोई कंपनी में सिंपल मैथमेटिक्स रहता है 10 तक का, राइट? ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं रहता है, डिफरेंट ग्रामेटिकल ग्रामर्स रहता है उसमें. ओके, कुछ वोकैबुलरी रहता है, राइट? सो प्रिपेयर इट. आपको इसकी भी साइट्स मिल जाएंगे ऑनलाइन पे. इफ यू प्रैक्टिस ऑन दैट वन, ओके, दैट इज आल्सो मोर देन सफिशिएंट. बट ये सब चीजें करनी है. सम कंपनीज विल टेक ग्रुप डिस्कशन. जस्ट सी व्हाट आर द रिसेंट ट्रेंड्स, कौन कौन से ग्रुप डिस्कशंस के टॉपिक चल रहे हैं अभी ट्रेंड्स में. प्रिपेयर ऑन दोज, राइट? सो अगर कोई टॉपिक आता है उसमें से तो आप मोर कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड यू कैन स्पीक अबाउट दैट वन, राइट? आप आपका ग्रुप बना दो 4-5 लोगों का आपके जो क्लास में है, राइट? एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट, राइट? हर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस भी करोगे आप, आधा 1 घंटा, राइट? तो ऑब्वियसली आप सबकी भी प्रिपरेशन हो जाएंगी. बिकॉज सी, आप अगर सोचेंगे कि मैं अकेला ही प्रिपरेशन करता हूँ, नहीं तो बाकी के भी मेरे कॉम्पिटिटर बढ़ जाएंगे, वो जो है ना मेंटेलिटी, छोटी मेंटेलिटी, उससे थोड़ा बाहर आ जाओ, राइट? व्हेन, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे भी आप जब काम करोगे पीवी डिपार्टमेंट में आएंगे तो वहां पे आपका एज अ टीम काम करना है. एट द एंड ऑफ डे वन पर्सन कैन नॉट रन द शो हियर इन पीवीटी जॉब्स. ओके, आपको टीम में ही जॉब करना है, आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने आना चाहिए, राइट? सो दिस थिंग यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ. करेक्ट?
आपके इसमें मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर दो, आपके लोगों में एक जन इंटरव्यूअर बन जाओ, बाकी के इंटरव्यूज ले लो, राइट? दैट आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा. मोर यू प्रैक्टिस, मोर you will get the confidence, right? And more you are confident, you will become more good communicator during interview, and it will definitely help you to crack the interview. करेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने बोला कि पीवी के लिए ये तो सभी कर रहे हैं, फार्मा एकेडमिक्स सबका है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन फार्माकोविजिलेंस दे रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप आपके क्यूर में कुछ एडिशनल स्किल सेट्स भी ऐड कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सर्टन लैंग्वेज में, उनके लोकल लैंग्वेज में रिपोर्ट चाहिए होता है, राइट? सो देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स व्हिच प्रोवाइड दिस लोकल लैंग्वेजेस कोर्सेस, लाइक जापानीज अगर आप सीख रहे हो, या स्पेनिश सीखते हो, जर्मन सीखते हो, राइट? दिस देयर आर दिस रेगुलेटरी अथॉरिटी, चाइनीज सीखते हो, राइट? तो उनको ये रिक्वायरमेंट है कि उनको लोकल लैंग्वेज में रिपोर्ट चाहिए, राइट? तो इन एडिशन टू दिस आपका फार्मा नॉलेज, फार्माकोविजिलेंस नॉलेज, अगर ये भी आपके पास स्किल सेट्स है, like you know any foreign language, or if you start learning that foreign language from now itself, right? So by the time you complete your pharma education, right, ये आपका prepare है, right? तो it will add additional weightage for you, and इनके भी packages higher रहते हैं, right? एक medium, I also come from rural background, I am also from middle family, okay, mid class family, and I can easily correlate what are your expectations from this job, okay? Basic expectations ये रहता है कि at least मेरा 5 digit में per month payment हो, right? 6 digits में, right? Correct? Hello, this is what your expectation, right? At the, तो ये जॉब आपको फार्माकोविजिलेंस दिला सकता है, राइट? बिकॉज सैलरी बहुत अच्छी है फार्माकोविजिलेंस डोमेन में, बट यू शुड बी, प्रेशर भी उतना ही रहेगा, राइट? वी फार्माकोविजिलेंस रन हियर बेस्ड ऑन टाइमलाइंस, राइट? तो आपको में भी पूछा जा सकता है कि आर यू एबल टू कंफर्ट, अगर कभी वॉल्यूम आता है तो यू मे हैव टू वर्क ऑन वीकेंड आल्सो, so you should be flexible for such kind of requirements if the company has, okay? And if you see, अगर बेस्ट पार्ट, अगर ये जॉब्स के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे 5 days वीक होता है, विच इज नॉट देयर इन द अदर कंपनीज, राइट? 5 days का, so that you can give Saturday Sunday to your family also, okay? If there is no volume or if that requirement is not there, right? And if you are interested in this computer wala job, right? So that is also available here, okay? And you will have the corporate exposure, right? So here, see, most of these companies are MNCs, right? So there can be project overseas also. So here you may get to work with the foreign clients also, and it will help us to grow vertically as well as laterally also. Correct? आपको foreign chances भी है, आप you can go abroad also if you are interested, and if you develop your skill sets accordingly, right? आप आपके सीनियर जो काम कर रहे हो ये डिपार्टमेंट्स में, उनसे उनके साथ कनेक्ट करो, डिफरेंट डिफरेंट फार्माकोविजिलेंस प्रोफेशनल्स को कनेक्ट करो, राइट? इट विल डेफिनेटली हेल्प यू नॉट ओनली गेटिंग जॉब्स, ओके, बट to grow your career also when you enter in this career, right? At the end of day, network is your net worth. It can help you at any point of time in your career अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं, ओके? Got it? Yes, sir. Okay. So Amit, can we take few questions and then we can conclude? Almost it's 1 hour, okay? Yes, Right. yes, yes, yes. Yes. So everyone, first of all, about this session, I must say this is very interactive session, and it is a very useful and knowledgeable session. So now, first of all, thank you, Nina sir, for delivering such a wonderful session, which will be definitely helpful to all students. And now we'll take into the consideration about your every question. Okay, please ask your question in the chat box or unmute yourself and ask. We will take some question for some time. Okay, yeah, thank you. Either you can chat or unmute yourself. Only one request to all of you, please try to avoid core pharmacovigilance questions, okay? Because we will have to discuss it in more details again. Because see, those question answer you will get on the net also, okay?
but try to be have generic questions, okay, which can be helpful for other guys also, okay. Otherwise, if we have to discuss those questions, definitely it will take much more time again, okay. Fine. You will get answers of those questions on the net, right? If you start asking me the classification of hypertensive drugs or NSAIDs, right, it will not be helpful at this moment, right? Isn't it? You know that that is available in your academics books, right? You can go and refer it there, right? If you start asking me what is augmented type or what are the different types of adverse events, right? Those are already available in your syllabus, right? So just try to ask questions which are career oriented. If you have any questions, okay, that will help out. Fine. And I have told you that everything is available openly on internet, okay. You can go and take the answers and questions about that as well, okay. But if you have any specific questions related to career, please feel free to ask. Yeah. Okay. Open. Yeah. So yeah, there are questions from the chat box. Can we take the questions, right? Are you getting my voice, Nina? Yes, Amit. Okay. So first question is, I learned Korean language from the Mahek. Then how can I get the job in foreign from any source? Korean language, right? Yeah. Hello, Amit. Yes, Korean language. Okay, good. Obviously, and the associates wants to apply the job in abroad, right? Yes, obvious. Obvious, right? So obviously, you start looking companies, okay, which are in Korea, okay. Especially on internet, you may find that list, okay, the companies which are working in Korea in pharmacovigilance department, okay. Once you get the list of that companies, okay, you can start connecting with the HRs of that companies who are recruiters, okay, and the people who are working in pharmacovigilance domain. You can connect with them. You can ask them, okay, if there is any additional skill set required, okay, which can help out to get job, okay, in that company. So, and you can prepare it accordingly, okay. But obviously, that company should also have that policy, okay, that they are hiring for that. They should have opening first thing at that moment, and they are ready to hire a person from the remote locations as well at that point of time. Okay, got it. So accordingly, that information you may get from HR department, okay, and you can start applying. You can start applying the companies from the company's website. Also, there is one career option there, okay. You can get the email IDs. You can send your resume there. There are different sites like Naukri.com, Times Shine, okay. So you start applying there by searching with certain keywords also, and you can apply, okay. And one more thing I forgot to tell you, okay, if ये बोल्ड करके रख देना, आपके जहाँ पे भी आप बैठते हो आपके स्टडी के लिए, बोल्ड करके रख देना कि अगर कोई आपको 1 रुपया भी मांग रहा है जॉब देने के लिए, ओके, दैट इज फेक जॉब. नो कंपनी टेक्स अ सिंगल रुपी फॉर गिविंग यू जॉब. कोई आपको ये बोलेगा कि मुझे 5,000 दे दो, मैं तुम्हें जॉब लगवा के दूंगा, या आई हैव कनेक्शन विद डिफरेंट कंपनीज, ओके, मैं आपको जॉब दिला दूंगा, ओके. सो दैट इज फेक. वो मोमेंट पे उसको ये कर दो, नहीं तो आप अननेसेसरी दूसरे विशेष साइकिल में फॉलो. गॉट इट. कोई भी कंपनी ऐसी नहीं कि जो पैसे लेती है कैंडिडेट से जॉब देने के लिए. गॉट इट. क्लियर. हेलो, am I audible? Yes, you're audible. Yes. Yes, sir. Okay. So the next question, I hope I answered also. In Pharmacovigilance, how many softwares we use? So we basically use our Argus, Aris, Aware. Any other, Ninad sir, you are mentioning? Yeah, see, there are others also, new different softwares coming, okay. And but see, basic logics remains same. जैसे मैं I will give you real life example. आप फोन पे यूज करते हो पेमेंट करने के लिए, गूगल पे यूज करते हो,
different bank apps are there, right? But basic structure remains same, right? आपको उनका स्कैन करना है, पे करना है, राइट? या नंबर डालना है, पे करना है, राइट? Only interface is different, right? Correct. But logic remains the same, right? Hello? You got Ninas's point? Right? So same is for this softwares also, right? नाम से अलग अलग होंगे, आर्गस होगा, अवेयर होगा, सफायर होगा, ओके? बट जो डाटा एंटर करना है आपको वो सेम ही रहेगा. आपको पेशेंट्स डाटा एंटर करना पड़ेगा, आपको पेशेंट्स को जो एडवर्स इवेंट्स हुए वो डाटा एंटर करना पड़ेगा, आपने पेशेंट्स को कौन से ड्रग्स लेने के बाद पेशेंट्स को साइड इफेक्ट हुए कंपनी का ड्रग लेने के बाद वो कंपनी के ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन एंटर करने पड़ेंगी. पेशेंट्स को अगर कुछ मेडिकल हिस्ट्री है तो वो एंटर करने पड़ेंगे, एंड दिस इंफॉर्मेशन विल बी देयर, ओके, इन ऑल दिस सॉफ्टवेयर्स, ओके. बट इन एडिशन टू दिस I will also like to tell you, now this is the generation of artificial intelligence, right? So if you can also do any additional courses, okay, which can help you to stay ahead in the race, like machine learning, natural languages, SQLs, okay, जहाँ पे आपको थोड़ा AI का भी exposure मिलेगा, okay, so that will be also an additional advantage, okay, got it? तो आप वो भी courses को explore कर सकते हो, okay, which will keep you ahead in the race. Got it? Because AI is going to replace people, okay, but AI cannot replace a people, okay, who uses AI, right? Somebody should be there to run that, right? Isn't it? अपने आप से तो AI काम नहीं करेगा, correct? Somebody should be there to give command, correct? Yes. Okay. So you start exploring, okay? Who asked that question, Amit? May I know the name? I think Hello? Okay. Fine. So you start. See, this information you will get on just check what is the information available in these databases, okay, which are used for safety. Apart from that, you also read about the Medra dictionary, which is frequently used to code the different medical terminologies, okay. What is WHO dictionary, okay. So what is company drug dictionary and all those things, okay. This will WHO drug dictionary. You just read about these things, okay, which are incorporated in the company database, okay, and which helps you to code different things in the database based on the information, okay, which is provided to you. You have to enter this information in the database by using this different dictionary, okay. At the same time, you have to also apply as well. Fine. yes. Okay, so the next question: getting job in bulk industry like QC QA department easily. Also in medical coding jobs are more. Why pharmacovigilance job is more difficult to getting, and also vacancies are less from pharmacovigilance job. Only getting from internal hiring or reference. Why? See, again, let me tell you the fact, okay. Again, it depends on company to company policies, and when any companies receive new project, okay, they will start hiring, okay. If company is already having sufficient staffing, okay, why they will start hiring? अगर आपको 5 लोग लग रहे हैं कोई काम के लिए, right, and आपके कोई बंदे ने पेपर, आप is not on designation, okay, who is going any to any other company, या आपके पास कोई नया additional work नहीं आ रहा है, right, and whatever work you have currently in the company, अगर वो 5 लोगों से चल रहा है तो why company will hire new associates, right, current, okay. And to answer your second part, why they are taking from internal reference, ऐसा नहीं कि कंपनी सिर्फ internal reference से ही लेंगे, okay. सी, अगर इंटरनल रेफरेंस से आता है तो वहां पे एक ट्रस्ट रहता है,
राइट अगर मैं किसी बंदे को रेफर कर रहा हूँ एंड इफ आई एम वर्किंग विथ कंपनी सिंस 10 years, राइट, तो ऑब्वियसली जो भी बंदे को मैं रेफर कर रहा हूँ उसको मैं जानता होऊंगा, राइट, and obviously that is an additional advantage for company also, right, rather than trusting on any another candidate. Okay, who is new, okay, जिसको कंपनी को पता नहीं है आपके बारे में, बट कोई ऑलरेडी कंपनी का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उसको रेफर कर रहा है, तो ऑब्वियसली देयर आर हाई चांसेस कि दैट पर्सन इज रेफरिंग गुड कैंडिडेट. ओके, बट ऐसा भी नहीं कि ऑल ओपनिंग्स आर टेकन बाय द इंटरनल रेफरेंस. देयर आर कंपनीज जहाँ पे वॉक-इन्स होते हैं, देयर आर कंपनीज, ओके, which replies to your resume after sending, okay, and they call you for the openings, okay, but here that you should have to do it active basis पे. एक एडवर्टाइज रहता है, राइट, टीवी पे, अगर वो जितना एडवर्टाइज फ्लैश होते रहता है आपके सामने उतना वो प्रोडक्ट आपके दिमाग में जाता है, राइट. तो हियर योर एडवर्टाइजिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट. आपका रिज्यूमे सभी जगह पे होना चाहिए. यू शुड बी एक्टिवली लुकिंग ऑन जॉब्स ऑन लिंक्डइन. यू शुड बी connections with the HRs of different companies. You should tell them that जब भी वैकेंसी होंगी प्लीज इन्फॉर्म मी, राइट, इजंट इट. आपने जितने भी नौकरी पोर्टल्स है, डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोर्टल्स, वहां पे आपका रिज्यूमे, सो इट इज नथिंग बट योर एडवर्टाइजिंग मीडिया, राइट. कंपनी को आके सपना नहीं पड़ने वाला है कि ये बंदा इज एक्टिवली लुकिंग फॉर फार्माकोविजिलेंस जॉब. यू हैव टू डू योर एडवर्टाइजिंग, राइट. फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज का स्टेटस रखा है आपके व्हाट्सएप पे, इट विल बी देयर फॉर 24 hours ओनली, राइट. अगर वो 24 hours में किसी ने देखा नहीं है, राइट, तो दैट पर्सन इज नॉट अवेयर कि क्या स्टेटस रखा था, राइट, इजंट इट. तो सेम गोज हियर. आप कंटिन्यूअसली मेल्स भेजने चाहिए एचआर डिपार्टमेंट्स को. आपका कंटिन्यू कनेक्ट होना चाहिए. यू कैन कॉल एचआर आल्सो, ओके, यू विल गेट दैट नंबर्स आल्सो फ्रॉम द लिंक्डइन. यू कैन मैसेज देम, राइट. So that's how they will come to know that this is the guy who is actively looking for the pharmacovigilance job, and that person has that skill sets as well, right. So these are the different methods by which you can approach to the recruiters. Got it? Hello? Yes, everyone. Yes, sir. सिर्फ आपको ऐसा अगर आप ये कर रहे हो कि मेरा बी फॉर्म हुआ है, आप किधर भी विदाउट अप्लाइंग मुझे कॉल आना चाहिए कंपनी का, तो दैट विल नॉट हैपन. ओके, यू हैव टू वर्क इन दोस डायरेक्शन. बट ऐसा भी नहीं कि आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हो और आपको कॉल्स नहीं आ रहे एंड यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट. यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस ऑन रेगुलर बेसिस, ओके, विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. ओके, मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ. आई हैव कंप्लीटेड एमएस फ्रॉम नाइपर. मुझे रात को 11 बजे कॉल आया था कि टुमारो देयर आर वॉक-इन्स इन कॉग्निजेंट. मैंने सिर्फ मेरा एक बैग लिया था, एक ये लिया था फॉर्मल शर्ट एंड पैंट. मैं मेरे गांव से वहां पे 11:30 बजे लास्ट मुंबई के लिए बस थी. मैंने वो पकड़ी, सुबह मुंबई गया. फ्रेंड के वहां पे एक था मेरा सीनियर, उसके यहाँ पे गया, फ्रेश हुआ, एंड आई हैव अटेंडेड दैट फेस टू फेस इंटरव्यू एंड आई क्रैक्ड इट इन फर्स्ट गो. गॉट इट. तो यू शुड बी रेडी फॉर सच थिंग्स. ऐसा नहीं कि अब मैं कहाँ पे जाऊँ, जान दो, नेक्स्ट टाइम जब आएगा तब देखूंगा. एंड दैट टू, वो कॉल मुझे कहाँ से आया, आई हैव कनेक्टेड दैट पर्सन वाया लिंक्डइन ओनली. एंड जब वहां पे उनको नोटिफिकेशन आया था कंपनी को, तो वो पर्सन ने मुझे कॉल किया कि टुमारो देयर आर वॉक-इन्स इन मुंबई कॉग्निजेंट. गॉट इट. तो यू शुड बी फ्लेक्सिबल. अगर आप स्टार्टिंग में कुछ कंस्टेंट करने लगे कि नहीं नहीं मुझे यही सिटी में जॉब चाहिए या मुझे वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए, आई कैन नॉट गो टू अदर सिटी, राइट, तो मुझे इतना ही पैकेज चाहिए स्टार्टिंग में, राइट. So we have to be little flexible. First, what I am think I would like to message you. First, learn and then earn, right? पहले जो इनिशियल पीरियड होता है आपको, you have to invest in learning, right? एक बार आपको स्किल सेट्स आ गया तो then there are a lot of companies which are ready to hire you, okay? And talent has always vacancy. Be it recession, AI आने दो, कुछ और भी आने दो, right? But talent will always have vacancy in every company. You should have that skill sets. Got it?
Hello, Amit, am I audible? Yes, yes. Okay. Okay, there are a lot of question I've in between answered them. So whoever I'm not getting answered, just ask these questions. I'm a third year student. I just want to get job in pharmacovigilance. What is the mandatory work I have to do, and what are the soft skill? Again, one more question required in PV. Okay. Can you come again, Amit? I missed the latter Yeah, thing. one student Pratik has question that he is in third year. He want to Okay. get job in pharmacovigilance. How he got? How we prepared? And one more question from the Pawan: are the soft skill required for PV? Two questions, sir. Okay, perfect. So Pratik, to answer your questions, as you are in third year of pharma, right? B pharma. So you have ample amount of time now for the preparation, right? So even now, I think that there are certain universities in which there is pharmacovigilance subject, right? Which is incorporated in your curriculum. Yes. So that is also more than sufficient. If you are well versed with that, okay, no will come out of it, okay, in your interview, because they are also know that you all are the fresher and you don't have exposure to all these other things, right? So they will try to ask you question from that part, like simple, what is different, what is ADR, what is adverse event, what is difference between ADR and A, simple questions, okay, which will be there, what is mean by pharmacovigilance, right? और जैसे मैंने बोला ड्रग क्लासिफिकेशन पूछेंगे या कोई डिफरेंट फार्मा बैकग्राउंड से पूछेंगे, सो यू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। आप अगर कोई प्रोजेक्ट करेंगे आपके बी फार्म में, आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट की, तो आस्क योर guide to give you any project which is relevant to the pharmacovigilance kind of thing, right? So that will be also an additional weightage, right? अगर आपने pharmacovigilance related project किया तो it shows that कि आपको पीवी का knowledge है, आपने definitely you might have worked on that one, right? During preparation of your project, right? So try to do that things. Apart from that, as I told you that we have list of questions, right, which are frequently asked in pharmacovigilance. Prepare those, okay? So definitely these all things will start you, okay, and this will make your ground, okay, to crack the interview. Got it? And to answer your questions, Pawan, okay, definitely soft skills will be required, okay. Communication skill is definitely required there, okay. And there is one more misconception, okay, but that is required, okay. English is a language. It is not a parameter to judge anyone's knowledge. Okay, keep this thing in mind. बहुत से लोगों को ये रहता है कि if I cannot speak English, how I can crack and all that, right? But we can work on those. अगर आपको questions पता है, simple चीज, आपका कल पेपर है और आपको पता है कि कल पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, right? So you prepare it very well, right? करेक्ट। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, आपको पता है कि कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं जनरली फार्माकोविजिलेंस में, यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर दोस क्वेश्चंस, राइट? तो वो तो आप इंग्लिश में, मैंने बोला है आपको हर रोज प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस भी जब करोगे आप क्या बोलते हो, लाउडली स्पीक करके, क्या बोलते हैं हम जनरली, दो टाइप के ये रहते हैं ना, एक बात करते हैं हम ओपनली एंड एक सिर्फ हम रीड करते हैं, राइट? सो रीड वाला प्रैक्टिस मत करो, आपने जो आंसर्स प्रिपेयर किए मिरर के सामने आप हर रोज आते जाओ एंड प्रिपेयर। एट द सेम टाइम ये भी पॉइंट मैं बताना भूल गया कि आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस भी मैटर करते हैं। आप अगर एकदम ऐसा स्ट्रेस होके बात कर रहे हो सामने वाले को, तो एवरीवन कैन इजीली कैच दैट, राइट? इवन विदाउट स्पीकिंग हम बहुत सी चीजें जज करते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द पोस्चर ऑफ एसोसिएट्स, राइट? कि अगर वो कंफ्यूज है तो इधर उधर देखेगा, अगर वो डरा है तो भी ऐसा थोड़ा उसका चेहरा बारीक हो जाएगा, उसको पसीना आना लगेगा। ओके, दिस थिंग शुड नॉट हैपन ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, राइट? यू शुड लुक कॉन्फिडेंट, राइट? तो इसके लिए आपको ये सब चीजें की प्रिपरेशन करने पड़ेंगे। एंड सॉफ्ट स्किल जैसे मैंने बोला कि यू शुड हैव गुड कंप्यूटर इफिशिएंसी, ओके, लाइक आपको प्रॉपर एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ओके। This will definitely help you. Apart from that, now there are different analytical tools like Power BI है, okay? So you should be well versed with this. अगर आप कोई
लैंग्वेज ये सीखते हो, SQL या कोई AI के रिगार्डिंग कुछ सीखते हो, कुछ मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज, या कुछ जैसे मैंने बोला कि इफ यू कैन आल्सो लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस, ओके, यहाँ पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रहता है कुछ कुछ कंट्रीज का, तो definitely these other soft skills also or these skills will help you, okay, to get job in PB. Got it? और जैसे कोई कंपनी में ग्रुप डिस्कशन है, राइट, सो ऑब्वियसली ग्रुप डिस्कशन है तो आपको यू शुड बी अ गुड टीम मेंबर, आपको बात करने आना चाहिए 5 लोगों में, राइट, सो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम टुडे ओनली. नाउ you just mentioned that you are third year pharma students, right, so there is ample time, so just make group of good students, okay, or your friends, and you can start practicing this, right. हर रोज एक एक टॉपिक ले लो या हफ्ते में एक टॉपिक ले लो, and you start doing discussion on that one, right, so it will build your confidence. Got it? Hello, hope it answers your questions, Pratik and Pawan. Hello. Yes, sir. Okay, after pass the interview, how many days we get offer letter? How many time we have to wait? See, company, it varies company to company, okay, because again after you crack the interview, okay, they will keep you on communicating, okay, HR will keep you on communicating, or you can also take follow-up of the HR regarding what is status of your candidature. And generally it happens, some companies will send you within 1 week, some companies will send you within 2 days, or some companies may take time like 1 or 2 months as well, okay, but they will keep you on updating, okay, HR will keep you have to take follow-up of the HRs. Fine. Some companies may wait for 2 to 3 months also if they have come for campus and still you are learning, right, in your final semester and all that, so they keep they wait, right, isn't it? So it varies company to company, and payment also varies company to company, and based on location, whether it is local company, whether it is MNC company, okay, so these different factors come into picture regarding salary as well. Yeah. So any other question, anyone? We mostly covered the questions. I even answered some of the few questions, and hopefully this session will bring a lot of information to you. Okay, so in the pharmacovigilance, you get all information like how you able to build the career in the pharmacovigilance as a fresher. We are mostly like guided to the fresher through our. If you want to learn more about it, you can also get our build your career through our certification course in the pharmacovigilance also, where we will train you first the domain knowledge, the skill development and placement assistance we will able to provide. Okay, so also that will be helpful. And again, like soft skill development, as Nina sir say, MS Office is very important. Email writing skill is equally important. English speaking, communication, these are also important. And about the academics, pharmacology is basically you have to focus more drugs, interaction mechanisms, and the basic concepts behind this. Okay, so that's it. I think that will be more sufficient for you for getting job in the pharmacovigilance. And again, if you are asking more about it, we are happy to help. You are already in the group where we are sharing the group link, like a link of this meeting. Okay, so there also you can able to ask. And for the today's session, if you have any query for last 1 minute, I will like extend this session. If you have any query, please ask. One last query, Ninath. I think 2 queries are there. My B Pharmacy is completed 2024. Now I want to complete my master's in pharmacology. It is beneficial. M.Pharm in pharmacology is beneficial. Who asked that question, Amit? Vishal. Vishal, okay. See, Vishal, here, Miss, you may take advice from your guide as well as senior members also, and opinion may vary from person to person also. But if you ask me personally, okay, just don't go on my personal advice. Don't go on my advice, okay? You take other opinions as well. But
see, the basic requirement is that for this role is that you should be B Pharma, okay, and you should have good pharmacovigilance knowledge, okay. So you can start your career, because see, even after, if you, when you invest 2 years for M Pharma, and when you start your career, you will be called as fresher only, right? And when you start your career after B Pharma, by that time you have 2 years of experience in pharmacovigilance, right? And always experience will be calculated, okay? Whenever there is any promotions, or whenever there are new opportunities, okay, they obviously they will try to take candidate who is having experience, right? Isn't it? So I would prefer to go in pharmacovigilance industry after B Pharma rather than doing M Pharma. But here you can do one thing. You can enter in pharmacovigilance, and simultaneously there are different institutes who provide such M.Pharm post-graduation courses, right? So you can do that as well simultaneously, right? And many companies also allow such kind of things, right? Isn't it? And institutions as well, that if any candidate is working, okay, they have distance learning of this M.Pharma and all that. So you can do that also. And just in addition to that, if anybody is interested in administrative careers, okay, it's better to go for MBA, okay, after B Pharma, okay, if you are in B Pharma, okay, so that, because as the hierarchy increases in the company, okay, there will be a team which will be assigned to you and all that, right? So you have to work with that team, and you have to lead that team. There are different tasks, right? So at that time, that MBA profession will definitely help you out. Fine. But to answer your question, Vishal, okay, it's my personal opinion, okay, it's better to go after the B Pharma only rather than doing a M Pharma. But please take opinion from your guides, seniors, and everyone, and then only take the decision. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay, so thank you everyone for this today's interaction. It's very helpful to us as well that you are interacting and asking your questions. So we also feel the same thing. Like, we're also happy to help you. Okay, so if you still are not getting connected with our group, I already shared the group link. Okay, in the group, I just again share. You can join this group where we have all information related to this webinar. And if you have any question, ask there also. Thank you all of you. And now Thanksgiving, that I would like to thank Ninad sir for his valuable guidance and today's presence, and for your valuable time to sparing with our students. That will be definitely help you to all for getting more information about pharmacovigilance and building their career in pharmacovigilance too. Yes. So over to you, Ninad sir. Any last message you want to give to our student so that they can able to apply? Thank you. Thank you, first of all, Amit, for giving me this opportunity to interact with such lovely audience. Okay, I can see that. Okay, this is the audience. Okay, which was very interactive. They were continuously asking very good questions. Okay, which have came from audience, and this shows that how much they are passionate about to work in this pharmacovigilance industry. So all the best to all of you. Okay, if you feel that I can be help out you at any point of time, you can connect me on the LinkedIn as well. Okay, so I will try my level best to help out you if I'm of any help. Hello. I'm audible, Amit? Yes. Yes. So all the So best for again, all. like yes. 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 Ninad. All the I best also for all of you to your career journey. Okay. from Global Pharma Academy also, I wish you all the best. Okay, everyone, to build your career, develop your skill. Okay, and apply for the positions. And if any query, any doubt, you connect with us. Okay, thank you very much for today's session. So we complete today's session. Okay, we conclude now the sessions, and thank you all of you for your time. Thank you, Ninad also. Thank you. Yeah. Bye. Everyone, you can leave. Yeah, Thank you, thank sir. you. Thank you. Thank you so much, sir. This is very beneficial for us. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. This is very beneficial for us, and we Thank you, sir. will understand it.
Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much.